अब आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। सेबी की अहम बोर्ड बैठक खत्म हो चुकी है और वहां से क्या कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग शाह, हमारे संवाददाता जो शाम से ही इस बोर्ड बैठक को ट्रैक कर रहे हैं, जुड़ गए हैं। अनुराग, बताएं क्या कुछ निकल कर आ रहा है, जो तमाम मुद्दे जो एजेंडे में थे, क्या उन सब पर कोई मंजूरी निकलती हुई आ रही है, क्या है बड़े ऐलान? देखिए, जो सेबी की बोर्ड बैठक है आज काफी लंबी चली है। अब बिल्कुल। जस्ट कुछ देर पहले ही ये बोर्ड बैठक पूरी हुई है और प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड एक बड़ा ऐलान हुआ है, जो ईटीना स्वदेश पे हमने आज बताया भी था कि बोर्ड बैठक के जो एजेंडे में था, जो आईपीओ के अंदर, पब्लिक इशू के अंदर जो लिस्टिंग का जो टाइम है वो T+6 से घटाकर T+3 कर दिया गया है। मतलब अब जो पहले T+6 दिन के लिस्टिंग के लिए लगता था, अब उसकी जगह आधा वक्त लगेगा, T+3 ही लगेगा। इसके अलावा एक और जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चिंताएं थी, उसको देखते हुए एडिशनल डिस्क्लोजर जो देने होंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो पॉसिबल सर्कमवेंशन हो सकता है मिनिमम शेयर होल्डिंग नियमों का और टेक ओवर रेगुलेशन का, तो इन सब चीजों को देखते हुए और सख्ती बरतते हुए जो एफपीआई निवेशक होंगे उनको एडिशनल डिस्क्लोजर जो है निवेश से जुड़े हुए देने होंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़े ऐलान का इंतजार कर रही थी और उम्मीदें लगाई हुई थी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन बोर्ड बैठक के अंदर टीईआर से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जिस तरह से रेशनलाइजेशन की बात की जा रही थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टीआर को लेकर, और या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड जो है फंड के परफॉर्मेंस बेस पे टीआर लागू किया जाए, तो वो जो है आज की बोर्ड बैठक के अंदर उससे जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा जो इन्वेस्टर ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म को और मजबूत किया गया है, जो स्कोर्स करके सिस्टम है उसको न्यू प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो जुड़ा हुआ होगा। तो जो भी निवेशकों की शिकायतें होती है उसका जो निपटारा है वो जल्द से हो सके, तो इसको लेकर भी इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल से जुड़ा हुआ एक बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा जो एक और डेट और हाइब्रिड से रिलेटेड जो ऐलान है कि लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जो है वो वॉलंटरी डिलिस्टिंग भी हो पाएगी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज की, और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की भी। तो ये एक और जो आज की बोर्ड बैठक के अंदर ऐलान किया गया। तो सबसे बड़ा ऐलान है प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, जो आईपीओ के बाद लिस्टिंग के लिए जो वक्त है अभी T+6 का, उसे घटाकर T+3 कर दिया गया है। एफपीआई से रिलेटेड जो ऐलान है कि अब एफपीआई निवेशकों को एडिशनल डिस्क्लोजर देने होंगे, और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस ऐलान का इंतजार कर रही थी, जो काफी अपेक्षित था टीआर से जुड़ा हुआ, वो आज की बोर्ड बैठक में नहीं देखने को मिला है। कुछ सवाल जो मुझे अनुराग आपसे पूछने हैं, तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की टीआर को लेके ऐलान है, क्या वो फिलहाल इसी बैठक में टल गया है कि आने वाली बैठकों में इस मुद्दे को वापस से एजेंडे में शामिल किया जाएगा? इसकी संभावना आपको दिखाई दे रही है फिलहाल, क्योंकि कोई एक मत नहीं बनती हुई दिखाई दे रही ना इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आज पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज की जो बोर्ड बैठक में इसको लेकर कुछ ऐलान होगा, इसको रेशनलाइजेशन को लेकर ऐलान होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड टीआर को लेकर ऐलान होगा, लेकिन जो बोर्ड की प्रेस रिलीज अभी दी गई है उसमें कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है। तो अभी से कुछ देर बाद जो है सेबी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, तो वहां पर और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कुछ वक्त के लिए ऐलान टल गया है या फिर इसमें और ज्यादा वक्त लगेगा। तो उस पर क्लैरिटी जो है वो कुछ देर बाद सेबी चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन जो हाल में अभी आज बोर्ड बैठक के जो फैसले आए हैं उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ टीआर का कोई मेंशन नहीं है। लिस्टिंग की जो टाइमलाइन है नई, वो कब से लागू हो जाएंगी अनुराग? एग्जिस्टिंग जो लिस्टिंग के नियम है T+6 से घटा के T+3 किए गए हैं, और ये जो टाइमलाइन इसमें जो बताई गई है वो 1 दिसंबर 2023 से 2 फेजेस में लागू की जाएगी। वॉलेंट्री फॉर ऑल पब्लिक इशू ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2023, यानी 1 सितंबर से ये वॉलेंट्री होगी T+6 से घटा के T+3 की टाइमलाइन लेना, और 1 दिसंबर 2023 से ये जो टाइमलाइन है ये मैंडेटरी की गई जाएगी। ये सेबी ने आज की बोर्ड बैठक के अंदर फैसला लिया है। अनुराग, सेबी की बोर्ड बैठक में से जो फैसले निकल के आते हैं वो निवेशकों के हित में होते हैं, एक रूपता और
पारदर्शिता के लिए होते हैं, ये समझाएं। एफपीआई निवेशकों के लिए जो अतिरिक्त डिस्क्लोजर का जो यहाँ पर ऐलान हुआ है, इसको समझाएं, इसको किस तरह से देखना चाहिए, बाजार के लिए ये किस तरह की खबर है और क्यों इस पर फैसला किया गया है। देखिए, जो निवेशकों का जो भरोसा है वो कंपनियों में बना रहे, उसको देखते हुए जो एफपीआई निवेशकों से अतिरिक्त डिस्क्लोजर की बात की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम है, जहां पर जो प्रमोटर कंपनी है उसको 25% छोड़ के बाकी जो 75% शेयर होते हैं वो पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो हाल के दिनों में ऐसे कुछ मामले आए थे जहां पर हमने देखा था कि राउंड ट्रिपिंग के जरिए या फिर ऐसी कुछ छोटी कंपनियां थी जिनकी कोई इतनी स्टेक नहीं था, उन सब के जरिए जो है वो हिस्सा एक प्रमोटर कंपनी ने ही अपनी दूसरी फॉरेन की कंपनी के जरिए या शेल कंपनी के जरिए उसमें निवेश किया हुआ था। तो उन सब मामलों से जो निवेशक है उसमें संदेह बढ़ता था, और ऐसे संदेहास्पद चीजों को रोकने के लिए ही ये अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियम लाए गए, जिसमें ऐसा ना हो कि विदेश से अंदर जुड़ी हुई कोई शेल कंपनी के जरिए निवेश किया जा रहा हो और वो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रमोटर की कंपनी से लिंक हो। तो ये अतिरिक्त जो डिस्क्लोजर के नियम है, इससे जो टेक ओवर रेगुलेशन है उसको भी उनके नियमों का भी पालन होगा, और जो सरकमवेंशन होता था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का, जिन उल्लंघन होता था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का, तो उसका भी उल्लंघन रोका जा सकेगा और एक ड्यू डिलिजेंस जो है वो ज्यादा हो पाएगी। क्योंकि जो विदेशी निवेशकों का हम जो ट्रेंड देखे पिछले कुछ वक्त से भारत की जो कंपनियां हैं उनके अंदर देखने को मिला है, उनका जो निवेश मिला है, तो उसमें अतिरिक्त डिस्क्लोजर से जो ड्यू डिलिजेंस ज्यादा होगी और निवेशक जो है शेयर होल्डर है उनको उनका भी भरोसा जो है कंपनियों के अंदर बढ़ेगा। तो उसी को देखते हुए ये सेबी के द्वारा एफपीआई रिलेटेड ऐलान किया गया है, जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनको एडिशनल डिस्क्लोजर देने होंगे। चलिए, अनुराग, आप हमारे साथ बने रहें। आपके साथ हमें स्कोर्स पर जो ऐलान किए गए हैं बैठक में, उस पर भी बातचीत करनी है, लेकिन इस बीच मेरे साथ आशीष सोमैया, सीईओ वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट, जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका। और हम सब काफ़ी देर से इन ऐलानों का इंतज़ार कर रहे थे। खैर, म्यूचुअल फंड्स के टीईआर को लेकर इस बैठक में से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जो फैसले आए हैं उन पर जो है आपकी राय हम चाहेंगे। हमारे संवाददाता ने काफ़ी विस्तार पूर्वक तमाम बातें बताई और एक करके इसको लेते हैं। आशीष, आईपीओ लिस्टिंग पर जो बड़ा फैसला हुआ है, समय घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। काफी समय से इस बात की कवायद तो चल रही थी, अंदेशा भी था, फाइनली मंजूरी मिल गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं पे भी अगर आप देखिए, स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा जो हमेशा बेनिफिट बताया जाता है वो लिक्विडिटी को लेकर के बताया जाता है। तो अगर आप देखिए, जैसे पहले हम लोग T+3, T+2, T+1 सेटलमेंट की भी बात हो रही है, तो जैसे सेटलमेंट के साइकिल्स चेंज हो रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप आईपीओ देखें तो पहले हफ्ते हफ्ते महीने महीने निकल जाते थे, वहां से हम 6 दिन पे आए, अब 3 दिन पे आए। तो जिस किसी भी तरीके से, क्योंकि अब पेपर वर्क कम हो गया है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है और रिकंसिलिएशन प्रोसेसेस है, मनी कलेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं सारे के सारे डिजिटाइज हो गए हैं। तो फास्टर टर्न अराउंड तो बहुत जरूरी है। तो इसी से पैसे की लिक्विडिटी बनी रहती है और लोगों का पैसा बैंकिंग सिस्टम में या अलॉटमेंट में फंसा नहीं रहे, उसके लिए ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दूसरा क्या है कि मार्केट का और आईपीओ जो है, कभी कभी क्या होता है कि आईपीओ इतना बिजी सीजन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हर हफ्ते में 2-2 आईपीओ भी हो सकते हैं, 3-3 आईपीओ भी हो सकते हैं, कभी बड़े आईपीओ बंचअप हो सकते हैं। तो उस तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम करते हैं साइकिल क्रंच करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आशीष, एक और चीज जिस पर आपकी राय हमें चाहिए, अब एफपीआई निवेशकों के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर और मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियम और टेक ओवर नियमों के बचाव के लिए यहाँ पर जो है अतिरिक्त डिस्क्लोजर को लेकर मंजूरी दे दी गई है। कितना अनिवार्य, खासतौर से इस समय जब हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ उनका जो दिलचस्पी है, निवेश है, वो बढ़ता जा रहा है? किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में, किसी भी मार्केट में, जब हम डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम करते हैं, लेकिन एज अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर या एज अ म्यूचुअल फंड हाउस में आपको एक बेसिक अगर पॉइंट आपको बताऊं, तो हमारे तरफ से, हमारे म्यूचुअल फंड में, हमारी तरफ से, हमारे बाजार में कौन कौन पैसे लगा रहा है, कौन अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर है, कौन इन्वेस्टर है,
इसका पूरा का पूरा हिसाब हम रखते हैं, क्योंकि हम जानना क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिजर्व बैंक है, इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स का जो पूरा कारोबार है, इसके लिए पूरी की पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी, हमारे मार्केट में कौन पैसा लगा रहा है, इसकी फुल ट्रांसपेरेंसी डोमेस्टिकली तो अवेलेबल है। क्योंकि अब मार्केट हमारा ग्लोबलाइज होते जा रहा है, फॉरेन मतलब दुनिया भर से यहाँ पे मार्केट का 20%, और अगर फ्री फ्लोट देखें तो 40% हमारा मार्केट फॉरेनर्स के ओनरशिप में है। तो डेफिनेटली हर नजरिए से अगर आप देखें तो इसका अल्टीमेट ओनर कौन है, कौन हमारे मार्केट में ट्रांजैक्ट कर रहा है, इसकी भी हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी ये, जैसे हम भी हमारे ग्लोबल बिजनेस है, उसमें हम भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पैसा मैनेज करते हैं। तो ये प्रॉपर हम रिटेल म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े और हमारे जो एंड इन्वेस्टर है वो सारे रिटेल इंडिविजुअल्स, HNIs वगैरह होते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं, तो उसके पीछे की ओनरशिप जानना भी बहुत जरूरी है। तो हायर डिस्क्लोजर वेलकम मूव है एक्चुअली। चलिए, आशीष, आपको थोड़ा सा हम गुजारिश करेंगे, आप रुकें, आप और अनुराग, और इस बीच सेबी चेयरपर्सन की बैठक भी शुरू हो चुकी है। चलिए सीधा वहीं का रुख करते हैं। We are happy to do that. So what I will do is, you've seen the press release. What I will do is, like always, give you a very broad overview of each of these items to share the regulatory intent and regulatory thinking behind each of these items, and then we'll move quickly on to question and answers. So T+6 to T+3, this is again one of those global firsts, I think. We will do the benchmarking and validate that, but like we moved into T+1 settlement for secondary market, and it's something that most jurisdictions are yet to implement, and they are they've been extremely complimentary of the fact that we did that without any glitch, any problems in terms of transition at all. We are very confident that similarly this T+3 will also happen without a glitch, because all the market participants involved, whether it is the exchanges, clearing corporations, the bankers, the RTAs, everybody has actually done their testing and their stress testing to figure out that they will actually be able to meet all the timelines that have been now put down. Overall, I guess what we're really pleased about is that what this will result in is that the issuers will get their money quicker, the investors will get their shares quicker, the those who didn't get allotment will get their refund or the unblocking quicker. So at the end of the day, time is money. So with this process, we will be giving to all the market participants lots of money in the form of 3 days. Item number 2 is in the area of listed debt. Here there are 2 provisions which are in some way linked. The first is in respect of if an entity has a listed paper, then subject to some provisions and some exemptions, the regulation will now be that all the paper that they issue would need to be listed. The reason for this is that, as you know, the bond market is not very liquid, and price discovery and valuation happens based on not just the trading in that particular in the paper of that particular issuer, but also in terms of the primary issuances done by that issuer. And therefore, the transparency on what was the latest primary issuance done by that issuer becomes very important for price discovery in the secondary market. So that has really been the driver of this proposal. Having said that, so what they will really be required to do, in any case, those issuers are complying with all the regulations because they have one listed paper, so they are anyway complying with all the regulations. The only additional requirement from them will be in terms of transparency of the structure and the terms of the what so far was unlisted debt issuance. So that is something that will help to improve price discovery in the market.
Linked to it is the issue of voluntary delisting, because when we got feedback from the market, as you know, we do very extensive public consultation. So one of the feedback that we got was that there may be some entities who do not really have plans of a lot of issue raising and raising of funds, and they were a one-off issuer, and they may not want to remain listed. So is there a mechanism for them to delist their bonds and be able to then therefore not have this requirement of continuous listing? So we have facilitated that. Again, subject to some conditions and some requirements. Number 3 is the enablement of direct participation in the Limited Purpose Clearing Corporation. In the last board meeting, the board had approved certain provisions for the Limited Purpose Clearing Corporation. As you know, this is the clearing corporation for the corporate bond repo market. So this, as you would recollect, is really a very important institutional building block for the bond markets, because if we are trying to encourage liquidity in the bond market, that can come only through market making. And market makers will have a viable business model only if they can have access to low-cost funds for their inventory, and that can only come from the overnight market in terms of the corporate bond repo market. So as a result of this, this last time we had done, there are 2 modes by which people can participate in the LPCC. Because this is an overnight market, the timeliness of being able to lend and borrow money is very important. So people would want as long a period to have flexibility in terms of being able to do the transaction, but they would need to have the settlement as quickly as possible so that they have access to funds. So for that, direct participation by the clients in the LPCC is quite crucial. So today the board approved a mechanism which would enable that to happen in order to facilitate even greater participation in the corporate bond repo market. The next item is in respect of REITs and InvITs. As you know, SEBI considers this a very, very important channel or a very important product through which capital raising can be done in our markets. We think there's a huge potential both in terms of our infrastructure space as well as the real estate space. And we found over the last many months that there is a very significant interest from capital providers, including overseas providers, in these vehicles. So what we have really done is we have introduced the concept of so first, what we have done is we have brought in a minimum unit holding requirement by sponsors. Reason for this is really very similar to the concept of skin in the game in mutual funds that we have. So the thought is that since the sponsors play a very active role in the REIT InvIT structure, very often they are the ones who are the promoters of the investment manager or the project manager. They actually are the operating entity for the operating asset. Therefore, for them to have a skin in the game beyond the 3 years that we had currently stipulated was important. However, again, based on the market feedback that we received as part of our public consultation, we got a lot of feedback, and we have therefore created the concept of the self-sponsored investment manager, which means that if an original sponsor wishes to have 100% monetization and to exit his role as sponsor, he not only will anyway have the option of finding another sponsor to come and step into his shoes. That was an option that was always available. But now they would also have an option of the investment manager itself being a self-sponsored investment manager. So this is additional flexibility which has been offered to the industry, and there has been a very positive response to this flexibility. We then move on to item number 5.
This is also something, again, which is in response to the need of the market. As you know, REITs and InvITs are very long-term investments, and they tend to be big, bulky investments. They're not a very diversified set of assets. And in that context, the unit holders felt that there was a need for them to be a part of the decision-making process of the investment manager, particularly because a large number of transactions do tend to happen as related party transactions with the sponsor, because the whole construct is that the sponsor is really monetizing his or her assets. So a large part of the assets that are purchased by the REIT or InvIT actually belong to the sponsor. So in a way, it is a related party transaction. And on an ongoing basis, a lot of the management of the asset is done again by the project manager or the investment manager, which is again typically belonging to the sponsor. So in this context, in order to give a uniformity of rights to the unit holders, what we have proposed is that anyone who crosses the 10% threshold of unit holding has the right to nominate a director. Of course, they may choose not to exercise that right. And even people who are below the 10% threshold can get together and nominate a person. But naturally, this person would need to be fully empowered by the investors who are nominating him or her, because there are very often confidential deals, there is confidential information, timely decision making. So it is envisaged that there would be some form of power of attorney. So if 3-4 people together have 10% and are nominating somebody to the board, they would effectively give a power of attorney to this person to represent them on the board. So this would ensure that there is a certain parity and uniformity of nomination rights on the board of the investment manager. The next one is in respect of additional disclosures from FPIs that fulfill certain criteria, certain objective criteria. Here, the essential driver and the